Okay. Hello all, welcome to the channel, and we are discussing about the linear algebra course. So let us start the class. This is lecture number 4, and we have last lecture we've understood about some properties. In this lecture we are going to discuss about some standard examples of vector spaces, right? Of vector space. So now if V over F is a vector space, V over F is a vector space, then F is a subset of V. Okay, so now examples. Algebraic structure. So what is an algebraic structure? Algebraic structure is basically uh, an binary operation with some binary operation with some composition basically, right? And vector space. Suppose algebraic structure is q over q. So now क्वेश्चन बनता है या q over q वेक्टर स्पेस बनेगा? तो बिल्कुल बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि जो फील्ड है वो फिर से सबसेट ऑफ द क्यू है। क्यू इज सबसेट ऑफ क्यू, so it is a vector space. Second, q over r. अब क्या q over r वेक्टर स्पेस बनेगा? क्या r जो है वो q का सबसेट है या फिर q r का सबसेट है? So r doesn't is a subset of q, so it is not a vector space. z over q. क्या q z का सबसेट है या z q का सबसेट है? तो q z का सबसेट नहीं है. Now r over q. Now it is a vector space r over q because q is a subset of r. R over r again is a vector space. C over r not defined. Huh? C over r, sorry, C over r is again a, because C is contained in r, right? Sorry, r is contained in C. Similarly, r over c, r over c, it's again a vector space because C is a subset of r. Is it? Not. नहीं है वो. R over C is not a subset. R over C is not a vector space. It is C over C. C over C is a vector space. Again, Z2 over Z2. This is a modulo operation 2, right? Z2 over Z2. So is it a vector space? It is a vector space. Z2 over Z2. Z3 over Z3. It is a vector space. So ZP upon ZP, where P is prime. It is a vector space. Now
if I ask Z2 Z3 over Z2, so it is not, because Z2 is not a subset of Z3. It is not a vector space. Now ZP upon ZQ. ZP upon ZQ. समझिए इसको. ZP upon ZQ. So ZP upon ZQ, where P and Q are distinct primes. Where P and Q are distinct primes. Is it a vector space? So it is not. क्यों नहीं है, अब डिस्कस करते हैं इसके बारे में. क्योंकि P और Q डिस्टेंट प्राइम नंबर्स है, तो जाहिर सी बात है कि वो दोनों का जो सेट बनेंगे दोनों से वो डिफरेंट होंगे, तो एक दूसरे सेट के अंदर कंटेन नहीं करेगा. इसी वजह से ये दोनों जो है वो वेक्टर स्पेस नहीं बनाते हैं, ZP ओवर ZQ. राइट. नाउ Z13 अपॉन Z11, जैसे कि एग्जांपल. तो 11 प्राइम में 11 प्राइम में 13 प्राइम में, पर क्या दोनों वेक्टर स्पेस बनाएंगे? नहीं बनाएंगे. ओके. सो नाउ Z7 अपॉन Z13, क्या ये वेक्टर स्पेस बनाएंगे? नहीं बनाएंगे. बोथ आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स. तो ये जनरल रिजल्ट था यहाँ पे कि ZP अपॉन ZQ where P and Q are distinct primes does not form a vector space. Z2 upon Z3, 2 is prime, 3 is prime, not a vector space. Z6 over Z6. Now so again both are not a prime number, but still it is not from a vector space because Z6 is not contained in Z6. Similarly Z9 upon Z9, ये भी वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा. सो राइट, अपन ने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखे. तो अब बात करते हैं कुछ और एग्जांपल्स की, पर मेरे हिसाब से ये जो एग्जांपल्स है वो सफिशिएंट है. सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक, स्पेस ऑफ n tuple. स्पेस ऑफ n tuple मीन्स व्हाट? अगर वेक्टर स्पेस V ओवर F हमें कुछ इस फॉर्म का दिखाई दे, Fn ओवर F, such that A1 A2 A3 up to An for Ai belonging to F over a field F, then this form of a system is known as n-tuple system. So now let us first verify the basic properties of the vector space. Now so vector addition. Vector addition. Suppose अपन ने let करा यहाँ पे, x को let करके चलते हैं A1 A2 A3 up to An tuple, y को let करके चलते हैं B1 B2 B3 up to Bn. राइट. सो x प्लस वाई अगर देखेंगे तो क्या बनेगा? A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 A3 प्लस B3 अप टू An प्लस Bn. An प्लस Bn. राइट. नाउ अपन चेक करते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन.
कैमरे में मत आना, दिखेगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन अगर चेक करते हैं तो अपन क्या देखते हैं कि अपन लैम्डा को x से मल्टीप्लाई करेंगे, सो लैम्डा टाइम्स ऑफ a1 a2 a3 up to an. This implies lambda times of a1, lambda times of a2, lambda times of a3, right? So this implies both the properties are being satisfied here. So it is a vector space, it forms a vector space. Now let us understand an example. Okay, so now v over f is a r2 over r, r2 over r, wait, r2 over r. Then so basically अगर r2 over r है तो उसके अंदर दो टपल होंगे a1 a2 such that a1 a2 belonging to r field, right? तो सपोज यहाँ पे एग्जांपल लिया 1,2, 1,2 बिलोंगिंग टू r2 over r, और एग्जांपल लिया 2,8, 2,8 बिलोंगिंग टू r2 over r. जब एडिशन करा तो क्या आएगा 3,10, तो 3,10 जो है वो भी r2 over r से बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है. वेक्टर एडिशन इज सेटिस्फाइड, राइट? नाउ स्केलर मल्टीप्लिकेशन. Scalar multiplication is alpha times of 1 comma 2. This implies alpha comma 2 alpha. So it also belongs to r2 over r. Implies both the condition is satisfied. So this is a n tuple space. Now moving forward, we will now see matrix space. Matrix space. So now v over f is a matrix of m n cross v over f is the matrix of m cross n over f is equal to a times of, wait, aij m cross n such that aij belonging to f, right? So now is a vector space. Now it's time to verify. Suppose first property,
vector addition. Now if so a equal to a of ij m cross n, b equal to b of ij m cross n, so now a plus b is equal to aij plus bij m cross n, which is cij m cross n. वाई, अब देखो यहाँ पे वेक्टर एडिशन जब अपन ने करा तो अपन ने क्या देखा कि दो मैट्रिक्स ली सेम ऑर्डर की, और जब उसमें एडिशन करा तो उसका ऑर्डर सेम रहेगा, तो मतलब जो वेक्टर एडिशन है वो प्रॉपर्टी अपनी सेटिस्फाई करती है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन. स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सपोज lambda into a means lambda into aij m cross n. This is equals to lambda times of aij m cross n. देखो जब अपन कोई भी स्केलर का मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स के अंदर, तो वो स्केलर जो है वो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा मैट्रिक्स के अंदर. इस वजह से स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो satisfied. Now we will see an example of the same. So example is what? Let me think. V over F equal to M2 cross 2 over R, which is Aij M cross N, where M equal to 2, N equal to 2, Aij belonging to R, right? So now example लिया, suppose 1 2 3 4. This belongs to M 2 cross 2 over R, right? Two zero 4 7 belonging to M2 cross 2 over R. Now if we add both the matrices if we add, then it is 1 2 3 4 plus 2 0 4 7. This is 3 2 7 11. So it is again a 2 cross 2 matrix with real entries, right? So therefore vector addition property is satisfied. Now scalar multiplication. Scalar multiplication is, suppose 1 2 3 4 into alpha, then it is alpha 2 alpha 3 alpha 4 alpha.
then it is also satisfied. So here we have seen few examples of different vector spaces. In the coming up lecture, we are also seeing some more examples of the vector spaces that are polynomial space, function space, sequence space and so on. So बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए edufacts. Thank you.